discuss more about D block, which are known as transition elements. They are known as transition elements because they show transition or gradual change from S block to B block. How S block element changes to B block. The d orbitals are also known as penultimate energy levels. Now, why so? They're known as penultimate energy levels because they have been filled in n-1 level, means outermost one less. इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस शेल है उससे एक शेल कम इसकी फिलिंग होती है, इसीलिए इसका नाम है पेनल्टीमेट शेल. Now coming to the very first property, that is general configuration. General configuration of D block element is n-1 D1 to 10 n1 to 1 to 2. क्यों n-1? क्योंकि फिलिंग ही d की n-1 होती है. d1 to 10 क्योंकि d की एक सीरीज स्टार्ट होती है d1 से और d10 तक एक्सटेंड होती है. So here is the explanation that it is an inner d orbital and they have to fill 1 to 10 electrons. So in generalizations they have been known as d block elements. लेकिन बहुत सारी exceptions भी हैं. There are several exceptions because of very little energy difference between n-1 d and ns orbital. The half-filled and completely filled set of orbitals are relatively more stable. क्योंकि अगर ns और d जो कि इनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो अगर ये हाफ फिल्ड है या कंप्लीट है तो वो d ऑर्बिटल्स एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं, जैसे क्रोमियम और कॉपर. लाइक क्रोमियम और कॉपर जो 3D सीरीज के हैं, दे हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. उनका n-1 हाफ फिल्ड है और s भी हाफ फिल्ड है. नाउ कमिंग टू कॉपर. कॉपर इज हैविंग s फुल फिल्ड एंड d हाफ फिल्ड. दैट इज वाई कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनली है 3D10 and 4s1 to provide extra stability, and they are natural exceptions of D block of their electronic configuration. So here let us continue more about D blocks. Here we can see the 3D series elements starting from scandium to zinc. Here 3D1 configuration, titanium 3D2, vanadium 3D3, chromium 3D4 and 3D4, but it is written as 3D5 and 4s1. Manganese highly stable, having D5 configuration, and then so on the configuration. And zinc, which is considered to be not showing the properties of D block because its shells are completely filled. So moving ahead with the D block, here is the second transition series starting from ytterbium ending to cadmium. Cadmium is also filled. Mercury is also having complete D orbital, so it is not showing the general properties of the D block elements, and they are considered to be the exceptions of D orbitals having complete D orbital. So here the common oxidation state, they are not regarded as transition elements. A very important question of D block, that why they are not considered, because of filled D block elements. Now let us continue more about D block. The D block orbitals or D block elements are transition elements. Why they are transition elements? Why they are transition elements? Because in comparison to other atoms, they have the filling of d orbitals and they influence the surrounding as well as they affect the atom molecules which having similar magnetic and electronic properties. इसका क्या मतलब है कि जो d block elements हैं उनकी magnetic और electronic properties काफ़ी similar होती है अपने ही ग्रुप में, यानी कि d block elements की आपस में ये properties similar होती है क्योंकि बहुत variation उनके size में नहीं होता. Now, with partly filled D block orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties जैसे variable oxidation state, formation of colored ions, formation of complex formation with variety of ligands. तो ये सारी important properties थी D की कि वो कलर फॉर्मेशन करते हैं. क्यों कलर फॉर्मेशन करते हैं? क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन होता है. इलेक्ट्रॉन एक D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल में बहुत आराम से मूव कर सकता है, हैविंग अ स्मॉल एनर्जी एक्सेप्टेंस. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि जितने D और S इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है. और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से. वो एज लीगैंड भी बिहेव करते हैं और लीगैंड्स के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाकर ये जो D ब्लॉक मेटल्स हैं वो